Hello, students. Yes, sir. Good afternoon, all of you. Students, मेरी वॉइस आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके ओके. Good afternoon, all of you. In today's session, we will discuss Turing Machine and Undecidability PYQs asked in GATE exam. Some of important PYQ we'll discuss. Okay. Okay. So this is the first question for you. Students, what is the correct answer for this question? Students, question आपको दिखाई दे रहा है? Anyone please confirm one more time. My question is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what is the correct answer for this question? Such type of question asked many times asked in GATE exam, right? Lakshmi ji बोल रहे हैं कि answer is A. What about others? Venkat, freshers. Yes, V. Lakshmi saying A. What about Venkat? What is your answer for this question? Sir, answer is given only in the table. Dear student, please everybody participate. Everybody सभी को participate करना. Whether answer is wrong or right, answer आपका सही हो गलत हो सभी को answer बताने हैं, right? So for such type of question, मैंने इसके लिए ये टेबल अटैच किया हुआ है. दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लैंग्वेजेस एंड क्लोजर प्रॉपर्टी एंड डिसीजन प्रॉपर्टी. दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड डिसीजन प्रॉपर्टी, राइट? सो दीज टू टेबल्स मैंने क्वेश्चंस के साथ अटैच किए जिससे आपके रेफरेंस के लिए आप इजीली इसे सॉल्व कर सकें इस तरह के क्वेश्चंस को. So dear student, this is the closure property. This question asked the closure property का question है. So these are the operations: union, intersection, set difference, complementation, intersection with regular, concatenation, clean closure, right? These are the operations and these are the language. RL is a regular language. This is a context-free language, deterministic context-free language. CS is a context-sensitive language, recursive language, and recursively enumerable language, right? So, sir, it tick indicate what? Sir, what does it mean? Tick means what? A regular language is closed under union operation. It means what? A regular language is closed under union operation. This tick means. It means what? कि two regular language. Let L1 is a regular, L2 is a regular, and आपने क्या किया? Union operation. Then it will be always what? Regular language. Always this is a regular language. That's why हम कह सकते हैं कि regular language is closed under union operation, right? Similarly, for CFL is closed under union operation, but DCFL is not closed under union operation. CSL is closed under union operation, right? Recursive language are closed under union. Recursive enumerable language are closed under union operation. Got it, student? तो इस टेबल को आप किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे इसे समझिएगा. रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन. यस, टू रेगुलर का इंटरसेक्शन closed here. It means what? Regular language closed under intersection operation. CFL CFL is not closed under intersection operation. Sometimes result आपका CFL हो सकता है, sometimes not CFL हो सकता है. That's why the conclusion is CFL is not closed under intersection operation, right? Similarly, DCFL is not closed under intersection operation. CSL is closed under intersection. Recursive is closed under intersection. Recursive enumerable language is closed under intersection operation. Got it, student? So इस टेबल को समझिएगा. आप कहीं ना कहीं गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे ऑपरेशंस आपने पढ़े होंगे, राइट? So the first question, first first part क्या कह रहा है? First part, L2 minus L1 is recursively enumerable. Sir, L2 minus L1. Sir, L2 is what? ये कह रहा है कि L1 कैसा लैंग्वेज है? L1 is a recursive language. L1 is a recursive language. L2 and L3
ये कैसे हैं? बी द लैंग्वेज दैट इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज बट नॉट रिकर्सिव डियर स्टूडेंट, राइट? Which of the following statement is not necessarily true? Not necessarily means sometimes true, sometimes not true, right? So L2 minus L1 is recursively enumerable. L2 minus L1 is recursively enumerable. So dear student, L2 minus L1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? Sir, L2 minus L1 equals to what? L2 minus L1 equals to L2 intersection of L1 complement, right? L1 is what? L1 is a recursive language. Now, recursive language ka complement, this is a complement operation. This is a complement operation. And recursive language is closed under complement operation. So here L1 is recursive, then L1 is recursive, then complement of this is also recursive. Complement of this one is also recursive, right? So, इस Venn diagram को देखिएगा स्टूडेंट. This is a DCFL language and this is a NDCFL और इसी को हम CFL बोलते हैं. This is CFL and this is a CSL and here this is a recursive and this is a recursive enumerable language, right? REL. Okay. So it means what? Ki sir, all regular language are DCFL, but all DCFL are not regular language. All DCFL are CFL, but all NDCFL or CFL are not DCFL. All CFL are CSL, context sensitive language. All context sensitive language are not CFL language. All CSL are recursive. Similarly, all recursive are recursively enumerable. All recursive languages are recursively enumerable. But dear student, all recursively enumerable languages are not these portion of recursively enumerable language are not recursive language, right? So L2 intersection of L1 हम क्या कह सकते हैं कि डियर स्टूडेंट L2 कौन सा है? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज. नाउ L1 complement if it is recursive और सारी रिकर्सिव क्या है? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल. सो दिस इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल आल्सो, दिस इज आल्सो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल. एंड intersection of two recursively enumerable is what? Recursive enumerable. It means what? Recursive enumerable language is closed under intersection operation. So this is producing recursively enumerable. This is true statement, always true, necessarily true, right? What about L1 minus L3? What about L1 minus L3? What about L1 minus L3? Dear student, here L1 minus L3, L1 intersection of L3 ka complement, it will be equal to this. Sir, L3 is what? Sir, what is L3? L3 is a language which is recursively enumerable but not recursive. L3, this portion, this language belongs to this set. It is a recursive enumerable language but not recursive language. Which of the following statement is not necessarily true? So, my dear student, complement of recursively enumerable language. This is a recursive enumerable language. Complement of recursively enumerable language. It is not closed. Sir, it is not closed. Sometimes it is recursive enumerable, sometimes it is not recursive enumerable, right? So complement of recursively enumerable language is not closed. Sometimes it is recursive enumerable, sometimes it is not recursive enumerable. So necessarily this is not necessarily true. आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा? recursive enumerable language. Recursive enumerable language. This is not necessarily true. Got it, student? Why so, sir? Because complement of recursive enumerable language is not closed under complement operation. So sometimes it is recursive enumerable, sometimes it is not recursive enumerable. So that's why this is not necessarily true. This is false statement. Now C part, L2 union L1 is recursive enumerable. Yes, sir. L2 क्या है? L2 recursive enumerable है. L1 कैसा है? Recursive है, right? Recursive और recursive enumerable का union क्या होगा? If ये recursive है तो ये REL भी है. सारी की सारी recursive language क्या है? REL. और ये भी REL है, recursive enumerable. And union of two recursively enumerable is what? Recursive enumerable. This is true statement. Excuse me. L2 intersection L1 is recursive enumerable. Yes, sir. This is REL and L1 is recursive, and all recursive language are recursively enumerable. This is also REL. So intersection of two recursively enumerable language is also recursively enumerable language.
So this is also necessarily true. So this is the answer, dear student. This is the answer. B is the right answer, not A. Okay. Okay. Now come to for next question. स्टूडेंट्स क्लोजर एंड डिसीजन प्रॉपर्टी से मैनी क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं, और मैं आपको बताऊं कि ट्यूरिंग मशीन वाला जो चैप्टर है इसमें आपका 3 to 4 मार्क्स का आने के चांसेस हैं। राइट, ट्यूरिंग मशीन के चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन 2 नंबर के तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन होल ऑटोमेटा की अगर हम बात करें, टीओसी की अगर मैं बात करूं, टीओसी के अंदर हाउ टू फाइंड लैंग्वेज, द टाइप ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना, वेदर इट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और सीएसएल लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज, which language is not CFL language, not CSL language, not recursive, not recursively enumerable language, लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना, इस पे 100% आपको 1 से 2 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा। क्लोजर एंड डिसीजन प्रॉपर्टी पे 100% आपको 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट, L1 इसमें कहा है, L1 कैसा है? रेगुलर है। L2 DCFL है, एंड L3 रिकर्सिव इन्यूमरेबल है। L3 recursive enumerable language but not recursive. Which of the following statement is false? आपसे false पूछा गया है, टेक इट सीरियसली, false पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि सारी रेगुलर कैसी हैं। ये दिस इज DCFL एंड हियर दिस इज CFL और NDCFL, CSL, recursive and recursive enumerable language, right? So सारी रेगुलर क्या है? सारी रेगुलर DCFL, ऑल रेगुलर आर DCFL, ऑल DCFL आर CFL, ऑल CFL आर CSL, all CSL are recursive, all recursive are recursively enumerable, but vice versa it is not true, right? So आपसे पूछा गया है L1 intersection L2 is deterministic CFL. Here L1 is regular. So students check this point. Intersection with regular. Check this number. Intersection with regular. रेगुलर के साथ किसी भी लैंग्वेज का इंटरसेक्शन हो तो वो रिजल्ट क्या होगा? रेगुलर पे रेगुलर रहेगा। इफ इट इज CFL तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? CFL इंटरसेक्शन रेगुलर, आंसर इज CFL। DSFL इंटरसेक्शन रेगुलर, रिजल्ट इज DCFL। CFL रिजल्ट वही आएगा, राइट? तो इट इज क्लोज, इट इज क्लोज। रेगुलर के साथ इंटरसेक्शन, इट इज DCFL। Yes, L1 is a D, L1 is, this is a regular, and this is a regular language, and this is a DCFL language. So intersection of this is, it will be DCFL. This is true statement. आपसे पूछा गया है false statement. Now L3 intersection of L1 is recursive. वेंकट इज सेइंग बी आंसर फॉर दिस। लक्ष्मी, आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? L3 intersection of L1 is recursive. Here L3 is recursive enumerable and L1 is recursive. Dear student, all recursive are recursively enumerable. So ये REL भी है। L1 recursive regular है। If it is regular, सारी रेगुलर क्या है? इधर देखिए, ऑल रेगुलर की रेगुलर, सारी रेगुलर क्या है? रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी है, राइट? सो दिस इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल आल्सो। या आप रिकर्सिव इन्यूमरेबल, या आप डायरेक्टली L1 क्या है? L1 रिजल्ट क्या है? रेगुलर है। दिस इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल। तो आंसर क्या आना चाहिए था? रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। बट आपने क्या लिखा है यहाँ, मेंशन क्या किया? रिकर्सिव। नो, यू कैन नॉट से कि सारी रिकर्सिव इन्यूमरेबल रिकर्सिव, राइट? रिकर्सिव को आप रिकर्सिव इन्यूमरेबल लिख सकते हो। इफ इट इज रिकर्सिव, डियर स्टूडेंट, इफ इट इज रिकर्सिव देन रिकर्सिव इन्यूमरेबल। बट इफ इट इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल देन यू कैन नॉट से कि दिस इज रिकर्सिव लैंग्वेज। सारी ऑल रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज आर रिकर्सिव। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे रिकर्सिव लिखा है, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये आपका रिजल्ट कैसा है? फॉल्स है। L1 even L2 is a context free language. Yes, L1 regular है, L2 context free है। If it is regular, then this is CFL, और 2 CFL का union is CFL. So this is true statement. Now L1 intersection L2 intersection L3 is recursive enumerable. Yes, L1 कैसा है? रेगुलर है। रेगुलर के साथ इंटरसेक्शन, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? जो आपका यहाँ जो मिल रहा है वही आएगा जो रेस्ट ऑफ द ऑल लैंग्वेज है। नाउ L2 intersection L2 क्या है? L2 is a DCFL. If it is DCFL, तो ये कैसा है? REL भी है। If it is DCFL, then REL L3, this is REL, and 2 REL का इंटरसेक्शन क्या होगा? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। 2 REL का इंटरसेक्शन with REL equals to REL. So this is also true statement. This is true, and here this is false statement, and this is also true. So correct answer false. B is a correct answer. Okay. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको विजिबल है? क्लैरिटी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ब्लर सा हो रहा है? No, sir, it's clearly visible.
वी लक्ष्मी TOC, how to learn TOC from basics, बट अब तो बेसिक से अब TOC पढ़ने का समय नहीं है, राइट? सो जनरली जो क्वेश्चंस TOC के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं 100% मिलेंगे। आप इस चीज को आप रिकॉर्ड कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, आप इस बात को। आपको फाइनाइट ऑटोमेटा से क्वेश्चन मिलेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? ओके, फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज, ओके। एंड CFL की क्लोजर और डिसीजन प्रॉपर्टी से हाउ टू फाइंड वेदर दिस इज लैंग्वेज CFL और नॉट CFL लैंग्वेज, रिकॉग्नाइज CFL लैंग्वेज, PDA का क्वेश्चन, ओके। सो आप इतना ज्यादा आप ये तो सारा ही लगभग सिलेबस हो रहा है, तो आप इम्पोर्टेंट क्या चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट TOC के अंदर कि सबसे पहले तो आप ये क्लोजर और डिसीजन प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आप सारे लगाइए। आपको इसमें 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा क्लोजर और डिसीजन प्रॉपर्टी पे, राइट? एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इससे 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, ओके। एंड फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन से आपको 1 से 2 नंबर का इस पर से मिलेगा, आपको 1 to 2 मार्क्स, ओके। एंड CFL और PDA से CFL में ये तो हाउ टू रिकॉग्नाइज लैंग्वेज, CFL और कॉन्टेक्स्ट फ्री, वो सारा इसी में कवर हो गया, राइट? PDA और ट्यूरिंग मशीन से बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए। PDA से क्वेश्चंस आया हुआ 1 से 2 मार्क का, लेकिन अभी आपको कम से कम 4 to 5 मार्क, 4 to 5 मार्क्स आप 100% कवर कर सकते हैं। 1 to 2 मार्क्स का आपका ये आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसमें क्लोजर और डिसीजन प्रॉपर्टी 1 to 2 मार्क्स, हाउ टू रिकॉग्नाइज लैंग्वेज कि दिस लैंग्वेज इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री और नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, इस पे जरूर 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये 5 नंबर तो आपका 100% है। बट TOC आपको 5 to 9 मार्क्स का, TOC आपको 7 to 9 मार्क्स का TOC आता है, राइट? गेट एग्जाम में TOC 7 to 9 मार्क्स इसका वेटेज है। तो बाकी का रेस्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, PDA को थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप उसके क्वेश्चन बना देंगे, ओके। चलिए कम टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? L1 is regular, L1 is regular, dear student. L2 is CFL, L3 is recursive, and L4 is recursive enumerable language, ओके। सो L3 का कॉम्प्लीमेंट, पहला वाला पार्ट जो लिया गया है सर, L3 कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ L4 इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल। सेकंड पार्ट जो दिया गया है L2 यूनियन L3 इज रिकर्सिव। थर्ड पार्ट L1 star intersection of L2 is CFL, and fourth part L1 union L2 is CFL का कॉम्प्लीमेंट, राइट? सो आपसे ट्रू पूछा गया है कि कौन सा ट्रू है, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, L3 अगर रिकर्सिव है, रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट क्या है? रिकर्सिव, देखिए ऑलरेडी रिकर्सिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव इज व्हाट? क्लोज्ड। सो ये अगर रिकर्सिव है, अगर ये रिकर्सिव है, सारी रिकर्सिव लैंग्वेज क्या है? रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज है। एंड दिस इज आल्सो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। एंड टू रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का यूनियन क्या आएगा? रिकर्सिव इन्यूमरेबल। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, पहला वाला ट्रू है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इज ट्रू। व्हाट अबाउट सेकंड? L2 यूनियन L3, L2 L2 क्या है डियर स्टूडेंट? CFL है। L2 इज अ CFL और L3 क्या है? रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ओके। एक मिनट, नहीं सॉरी, L3 रिकर्सिव है, L2 CFL है और L3 रिकर्सिव है। तो इफ इट इज CFL, इफ इट इज CFL तो ये क्या है? रिकर्सिव भी है। ऑल CFL आर रिकर्सिव लैंग्वेज, और दिस इज आल्सो रिकर्सिव लैंग्वेज। एंड टू रिकर्सिव का यूनियन डियर स्टूडेंट, टू रिकर्सिव का यूनियन क्या है? रिकर्सिव। दिस इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। L1 star intersection of L2 is CFL. L1 is what? L1 is regular, and clean star closure of regular. Regular is closed under clean star operation. This one, regular is closed under clean star operation. So this is regular. Regular intersection with CFL, it will be CFL. This is also true statement. L1 in L2, L1 is regular, L2 is CFL, it will be CFL. But here this is mentioned CFL complement. CFL complement. That's why this is a false statement.
तो आपसे पूछा गया है ट्रू कौन कौन सा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, सो डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, so D is the right answer. Okay, now come to this question, student. What is the correct answer for this question? So this question is based on decision property. Decision property. So I have attached this table. ये table आपके exam में नहीं given था. This is not given in the exam. I have attached this table. So what is the correct answer for this question, dear student? This is the question. This is the statement. G is CFG if LG equals to phi. G is CFG is LG equals to sigma star. M is a Turing machine. Is LM is regular. A is a DFA and N is a NFA. Then LA equals to NA. Right? So undecidable आपसे पूछा गया है. Ask undecidable. So what does it mean, dear student? What is the means of this table? So basically, this is a membership problem. Whether W is belongs to L or not, W is belongs to L or not. This is a membership problem. Membership problem is decidable for regular language, for DCFL language, for CFL, for CSL, for recursive. So membership problem is decidable for all language except for recursively enumerable language. Here this is undecidable. Here this is undecidable. Now L equals to phi. L equals to phi. This is emptiness problem. L, whether this language is empty or not empty, L equals to 5, whether this language is empty, this is an emptiness problem. It is decidable only for regular DCFL and CFL, but it is undecidable for CSL, recursive and recursively enumerable. Okay. L is sigma star. This is a completeness problem. Sigma star is a complete string of sigma star member. This is a completeness. So whether this language L equals to sigma star, this is a complete. Is it complete? So this is decidable only for a regular or DCFL, and rest of the all this is undecidable. Rest of the all this is undecidable. L1 equals to L2. This is a equality problem. Equality problem. It is decidable for regular and DCFL. It is undecidable for all rest of the all languages, right? And L1 is a subset of L2. This is a subset problem. This is decidable only for regular and rest of the all. This is undecidable. Okay, L is finite or not. The finiteness problem. This is decidable for regular DCFL and CFL, and it is undecidable for remaining all. Right? L1 intersection of L2 phi disjoint set problem. This is a disjoint problem. This is decidable only for regular and rest of the all. This is undecidable. Okay. L is regular. Whether R is a given regular language, this is decidable for this, and rest of the all undecidable. Okay. L is regular. This is a regularity problem. This is decidable whether the given language is a regular language or not. This is decidable for regular or DCFL, and rest of the all this is undecidable. So student, आप you understand this table, then easily you can solve this question. My dear student, first question is saying GCFG if LG equals to 5. This is a emptiness problem. Emptiness problem for what? For CFL. CFG generate CFL context free language. So this is first statement. This is the emptiness problem of context free language. So emptiness problem of context free language. So whether it is decidable or undecidable. So emptiness. This is the problem. Emptiness problem for context free language. This is decidable, dear student. This is a decidable D. And G is CFG is LG equals to sigma star. G is a CLG equals to sigma star. LG CFG it is CFL. This is the completeness problem of context free language. This is undecidable, dear student. Here this is undecidable. Okay. M is Turing machine is LM is regular. Is LM is a regular. M is a Turing is LM is a regular. So this comes under this. So this is undecidable. This is undecidable. This is undecidable. A is a DFA. A is a DFA and N is a NFA. LA equals to NA. Whether this is the DFA and NFA both are except the same set of strings because every NFA के corresponding आप DFA generate कर सकते हैं, right? So DFA and LA, this is the equality problem. This is the equality problem of two regular languages. So this is a decidable problem. So dear student, this is a decidable problem. So question is asked undecidable problem. Which are undecidable? 2 and 3. 2 and 3 are undecidable. So option D is the correct answer. D, 2 and 3 are undecidable, right? Now, dear student, this question asked in GATE exam, but this table, I have attached this table. This table is not given in exam, right? So which of the following is are decidable? So according to this table, you can solve easily. So whether the intersection of two regular languages is infinite, intersection of two regular languages, dear student, intersection of two regular languages is what? रेगुलर डीएफए एनएफए ये सारा क्या है, रेगुलर पे सारी चीज डिसाइडेबल है. यू कैन चूज ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द दिस
all are decidable. So this is decidable. Whether a given context-free language is regular, whether the given context-free language is regular, this comes under this. So context-free language, this is undecidable, dear student. This is undecidable. This is undecidable. Whether two push-down automata accept the same language, L1 equals to L2, so this is also undecidable. Whether the given grammar is context-free grammar. Now this question is asked regarding CFG, context-free grammar. So context-free grammar is whether the given grammar is context-free grammar. Yes, आप directly production rule देखिए. What is the production rule of context-free grammar? A implies alpha, where A belongs to V, and alpha is belongs to V union T star. राइट ए प्रोडक्शन इज दिस फॉर्म अगर आपके प्रोडक्शन इस फॉर्म के हैं तो ग्रामर क्या होगा सीएफजी अदरवाइज ग्रामर इज नॉट सीएफजी राइट सो this is decidable so first and four are decidable this question is asked for so D is the correct answer first and four are decidable right what about this denoting encoding of automata m suppose 01 which of the following languages are not recursive sir what is recursive language जिसके लिए halting Turing machine exist करे or algorithm exist करे और decidable okay recursive language are also known as decidable language right not recursive this is asked not recursive sir what about recursive language जिसके लिए क्या हो halting Turing machine exist करे halting Turing machine और सारी की सारी decidable डिसाइडेबल प्रॉब्लम वो कैसी है रिकर्सिव में है और डिसाइडेबल कौन होती है जिसके लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट करे राइट सो फर्स्ट इज डिसाइडेबल सो पहला दिया m is a dfa such lm equals to 5 this is the emptiness problem of regular language right this is because dfa and nfa both generate regular language so this is the emptiness problem of regular language so emptiness problem of regular language this is decidable if it is decidable then this is recursive this question is asked not recursive so come to this dear student M is a DFA. This is also decidable. So if it is decidable, then this is recursive. Now PDA. PDA is what context free language, context emptiness problem of context free, emptiness problem of context. This is also decidable. This is also decidable. If it is decidable, then this is recursive. M is a PDA such that LM equals to sigma star. M is a PDA such that LM equals to sigma star. My dear student, this is the completeness problem of context free language. Completeness problem of context free language. This is undecidable. This is undecidable. If it is undecidable, then this is a not recursive. This is not recursive. So question is asked not recursive. D is a right answer. D is the right answer. Okay. Now come to next question. Yes, student. What is the correct answer for this question? Everybody reply. Everybody reply answer of this question. Yes, students. क्या correct answer होगा? Yes, what is the correct answer for this question? C. Venkat is saying C. Which of the following decision problem are undecidable? Given NFA N1 and N2 is N1 intersection of L and 2 equals to 5. This is NFA and intersection. NFA DF is related. This is the emptiness problem of interest. And this is 5 or not 5. So this is decidable, dear student. Right? CFG, GFG, string X belongs to sigma star. If it is CFG, then this is a context-free language. This is the membership problem of context-free language. So second, membership is also decidable. This is also decidable for context-free language. So this is also decidable, dear student.
CFG G1 equals to G2, LG1 equals to LG2. This is a context-free language. This is the equality problem of complete CFL. This is undecidable. This is undecidable. Okay. Turing Machine LM equals to 5. This is also undecidable. So third and fourth is the right answer. आप देख रहे हैं कि फटाफट आप इस टेबल अगर आप इससे करते हैं तो सारे क्वेश्चंस आप चुटकियों में कर देंगे, राइट? सो कम टू दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस तरह का ले लेते हैं. Which of the following is are undecidable? G CFG LG equals to 5. CFG है undecidable पूछा गया, yes. नहीं, this is decidable. Emptiness problem of context free, this is decidable. And here this is undecidable. Turing Machine LM is regular, undecidable. DFA है तो ये decidable है. 2 and 3. 2 and 3 is D is the correct answer. Okay. Now come to reducibility theory. Student, इस पोर्शन से भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में आए, many times asked in gate exam. So what is reducibility theory? Dear student, if a problem P1 reduced to problem P2, I have two problem P1 and P2, right? But I cannot solve P1 problem, but I can reduce P1 to P2. I can reduce P1 to P2, right? I cannot solve this P1 problem directly, but I can reduce P2 problem. But I have a solution of P2 problem, then you can generate the solution of P1 problem. This is the reducibility theory, right? So if P1 is reducible to P2, the sign of reducibility either this one or sign of this reducibility either this one. Okay. So if problem P1 is reduced to problem P2, then using the solution of P2, we can solve the problem P1. Okay. So what is the conclusion of this, sir? What is the conclusion of this, sir? If P1 is reduced to P2, then there are two conclusions. Sir, first is, sir, if P2 is decidable, then P1 is decidable. Dear student, sir, if P2 is decidable, then P1 is decidable. Sir, if P2 is decidable, then P1 is decidable. Implication sign, if P2, then P1. If P2 is decidable, then P1 is decidable. So this one, okay, okay. So second part is saying what if P1 is already proven to undecidable, then definitely P2 must be undecidable. If P1 is undecidable, then P2 must be undecidable. Dear student, X implies Y. इसका contrapositive of this equals to what? So negation of Y, this implies negation of X. So what does it mean? It means that this is equivalent to what? This is equivalent to contrapositive of this one. So these are the two statement. Conclusion of these two. पहला कंक्लूजन आप ऐसे बोल लीजिए, इसी बात को कान को इस तरह से पकड़ लीजिए, इस तरह से पकड़ लीजिए, राइट? सो P1 implies P1 reduced to P2 means if P2 is decidable, then P1 is also decidable, right? P1 भी decidable होगा. But sir, if P1 is undecidable, then P2 must be undecidable. Okay, so this is the reducibility theory. आप समझ सकते हैं कि आप इसका मतलब है सर if P2 is decidable, then P1 is decidable. Sir, if P2 is decidable, then P1 is decidable. For a student, it is equivalent to contrapositive of this. If P1 is undecidable, then P2 must be undecidable, right? Then P2 must be undecidable. So these are the two statements. Remember it, right? Now solve this question. What is the correct answer for this question, student? Yes. Everybody please reply answer for this question. Question is saying consider three decision problem P1, P2 and P3. P1 कैसा है? P1 decidable है. P2 is undecidable. Which of the following is true? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर P1 को मैं P2 में रिड्यूस कर दूं तो पहला कंक्लूजन क्या था? If P2 is decidable, then P1 is decidable. If P2 is decidable, then P1 is decidable. Second था, sir, if P1 this implies negation of P2, it means this is undecidable, then this must be undecidable. Okay. So पहला ऑप्शन P3 is decidable if P1 is reduced to P3. Dear student, P1 is reduced to
P1 is reduced to P3, then P3 is decidable. सर P1 ये तो मैंने नहीं कहा है डियर स्टूडेंट, क्या मैंने ये कहा है? क्या कहा है? if P2 is decidable, अगर इधर वाला राइट हैंड साइड वाला दिस पोर्शन राइट हैंड साइड वाला डिसाइडेबल है तो ये डिसाइडेबल होगा, और ये वाला अनडिसाइडेबल है तो राइट हैंड साइड मस्ट बी अनडिसाइडेबल. सो P3 इज डिसाइडेबल, P3 इज डिसाइडेबल if P1 reduced to P3. नो, ये स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ P3 is undecidable if P3 reduced to P2. If P3 reduced to P2, here P2 is undecidable. No, ये भी मैंने नहीं कहा है, राइट? मैंने ये कहा है P3 अगर P2 में रिड्यूस हो रहा है तो P3 आपका क्या होगा? अनडिसाइडेबल. नो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इधर वाला पोर्शन अनडिसाइडेबल हुआ है, ये अनडिसाइडेबल होता और ये इसमें रिड्यूस होता, राइट? सॉरी, ये अनडिसाइडेबल होता और ये इसमें रिड्यूस होता, तो ये P2 अनडिसाइडेबल होता, बट राइट. सो ये कंक्लूजन भी आपका फॉल्स है. ओके. P3 is undecidable if P2 is reduced to P3. Yes, this is undecidable. So left hand side, this is undecidable. Dear student, this is undecidable. If it is left hand side is undecidable, reduced to R3, then it must be P3 must be undecidable. So this is the correct answer. Okay. This is the correct answer for this question. Now come to D part. P3 is decidable if P3 reduced to P2's complement. My dear student, P3 reduced to P2's complement. Sir, P2's क्या है? P2's कैसा है? Undecidable. Complement of undecidable is what? Not known. Complement of undecidable नहीं पता है क्या है. Complement of undecidable, it is decidable. No, you cannot say it is decidable, right? So ये कह रहा है P3 is decidable if P3 reduced to P2's complement. Sir, what is the complement of undecidable? It is not decidable, right? Okay. So ये कहना ये आपका गलत है कि P2's complement. So this is also false. So correct answer C is the right answer. Okay. Lakshmi and Alka, precious. Right answer is C, not B. Right. Now, similar pattern ka question. Solve this question and what is the correct answer for this question, dear students? X is a recursive language. Dear student, X क्या है? It is a recursive language. By be a recursive enumerable language. It is a recursive enumerable language, but not recursive language. And let W and Z be two languages such that by is complement reduced to W. Dear student, by is complement is reduced to W and Z reduced to X dash. Z reduced to X dash. Okay. Which of the following statement is true? W can be recursive enumerable and Z is recursive. My dear student, what is X? Sir, if it is recursive, X is recursive. If it is recursive, then complement of X dash is also recursive. If X कैसा है? Recursive, then complement of X dash is also recursive, and all recursive languages are decidable. And the complement of decidable is also decidable, right? So here this is decidable. This is decidable, right? Now check if P1 is reduced to P2. If P2 is decidable, then P1 is decidable, right? यही मैंने कहा था. If P2 is decidable, then P1 is decidable. So Z कैसा होगा? Z, my dear, Z decidable होगा. Z decidable होगा. If it is decidable, then Z कैसा होगा? Recursive होगा. Z कैसा होगा? Recursive होगा, right? Now, second state, this statement, by complement. What is by? By is recursively enumerable. This is undecidable. This is undecidable, undecidable, and it reduced to W. It reduced to W. If it is undecidable, undecidable का complement. Undecidable का complement. This is not recursively enumerable. This is not recursively enumerable. This is not recursively enumerable. Sir, why is it undecidable? And it reduced to W, then what? W is what? W is not recursively enumerable. W is not recursively enumerable, and Z is a recursive. So what is the correct answer? W can be recursively enumerable. Z, no, this is wrong. भाई सीधी सीधी बात है, बाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाई इज नॉट रिकर्सिव इन्यूमरेबल.
This is by dash, it reduced to W. So this is not RE, not RE is reduced to W. So W is not RE, W is not recursively enumerable, and Z is recursive. I think C is a right answer lag raha hai. W can be recursive? No, not recursive. Z is not recursive. Correct answer is C is the right answer, student. Okay. Dear student, reducibility theory. So Viendas, first of all, understand the reducibility theory. रिड्यूसिबिलिटी थ्योरी क्या आपको बताया था कि P1 इज रिड्यूस टू P2. पहला स्टेटमेंट था कि P2 अगर डिसाइडेबल हुआ तो P1 भी डिसाइडेबल हो जाएगा, राइट. सेकंड स्टेटमेंट था कि इफ इधर वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन अनडिसाइडेबल हुआ, देन P2 दिस इज मस्ट बी अनडिसाइडेबल, राइट. सो ये कह रहा है एक्स इज रिकर्सिव लैंग्वेज. एक्स कैसा है? रिकर्सिव. और रिकर्सिव लैंग्वेज कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट? डिसाइडेबल लैंग्वेज होते हैं सारे के सारे. रिकर्सिव क्या है? रिकर्सिव इज आल्सो नोन एज डिसाइडेबल लैंग्वेज. सर व्हाट इज डिसाइडेबल? जिनके लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट करे, राइट. सो एक्स इज अ रिकर्सिव. इफ इट इज रिकर्सिव एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होगा? इट इज आल्सो रिकर्सिव एंड ऑल रिकर्सिव लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज डिसाइडेबल लैंग्वेज. सो दिस इज आल्सो डिसाइडेबल, राइट. सो ओनली डी एंड राइट, ओनली डी. ओके, ओनली डी. Now next, y is a recursive enumerable. Y कैसा दिया गया है? Recursive enumerable language. Now फिर कहा क्या है? y का कॉम्प्लीमेंट रिड्यूस टू z. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y डियर स्टूडेंट क्या हुआ? सर नॉट रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, नॉट रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, राइट. एंड नॉट रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, दिस इज आल्सो अनडिसाइडेबल. सर आप इसको इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट. एवरीबॉडी प्लीज. Here this is a recursive language and this is recursively enumerable language, and this is non-RE, non-RE, not recursive enumerable language, right? So देयर स्टूडेंट इसके लिए हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करे. सारी रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करे. एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज के लिए क्या होगा? ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगा. एंड इसके लिए नो कंप्यूटर नो ट्यूरिंग मशीन, नो कंप्यूटर नो ट्यूरिंग मशीन, नो कंप्यूटर नो ट्यूरिंग मशीन. गॉट इट स्टूडेंट? लेट दिस इज द सेक्शन नंबर 1. हियर 1 number, here this section is 2 number and this section is 3 number. Okay, so my dear student, अगर मैं 1 की बात करूं, ओनली 1 की, सो 1 किसके अंदर आ रहा है? रिकर्सिव के अंदर. एंड सारे रिकर्सिव लैंग्वेज इनको क्या बोलते हैं हम? डिसाइडेबल ऑल्सो बोलते हैं. दिस इज डिसाइडेबल. नाउ 1 + 2 = व्हाट? 1 + 2 क्या होगा? सर 1 + 2 दोनों को मिला दें तो इस सर्किल की हम बात कर रहे हैं, अपर सर्किल की, राइट. इट इज रिकर्सिव प्लस रिकर्सिव इन्यूमरेबल. 1 + 2 बराबर क्या होगा? इट इज अ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल REL. एंड ये क्या है? सेमी डिसाइडेबल. सेमी डिसाइडेबल. ओनली 2 की बात करें हम, ओनली 2 मींस दिस वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, ओनली 2, ओनली 2. सो दिस इज REL बट नॉट रिकर्सिव. दिस इज REL but not recursive, but not REC. And this is undecidable, this is undecidable. Okay, now what about 2 + 3? 2 + 3 अगर दोनों की बात की जाए, so this section here, this section is what? Undecidable. 2 + 3 is not RE. 2 + 3 is what? Not REC. ये गारंटी है. This is REL, this is REL but not REC. This is not REC. आप इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, here to here. This is not REC, not recursive language. So definitely, if it is not recursive language, then this will be what? Undecidable. This is what? Undecidable. Okay, and this is what? Undecidable. Why is it undecidable? Because this is RE and here this is not RE. So RE plus not RE, it will be what? ये आपका undecidable. Okay. Now only three part is saying what? Not RE, not RE. This is not a recursively enumerable language. There is no Turing machine.
no, you cannot design computer for this portion. So this is undecidable, undecidable also, undecidable. Now what about, sir, 1 plus 2 plus 3? 1 plus 2 plus 3 is what? 1 plus 2 plus 3 is what, dear student? Here one, this portion is RE, this portion is RE, REL, and this portion is not RE, right? So it will be what? It will be what? Undecidable. And इसी को बोलते हैं 2 की power sigma star. And this is set of all languages, set of all languages, and this is also set of all languages. It is what? Set of all languages. Okay, now come to हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं. So पहला कह रहे हैं W can be recursive, enumerable, and Z is recursive. So फर्स्ट रीजनिंग दिया गया है, by dash is reduced to what? W, and sir Z reduced to X dash, and Z reduced to X dash, right? So my dear student, now the conclusion is, sir W, sir X is recursive, then X dash what? Decidable. This is decidable. Okay. And here by bar is not recursive, this is undecidable. यह हम not RE ले लेते हैं क्योंकि not RE के बीच में पूछा गया है. ओके. सो जेड अगर एक्स डेस में रिड्यूस हो रहा है तो व्हाट अबाउट जेड? जेड आपका डिसाइडेबल है या जेड सारी डिसाइडेबल क्या है? रिकर्सिव हम बोल सकते हैं सारे डिसाइडेबल. एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू व्हाट? डब्ल्यू, दिस इज नॉट आरई. और अनडिसाइडेबल हम बोल सकते हैं नॉट आरईएल और अनडिसाइडेबल. सो डब्ल्यू इज नॉट आरई एंड जेड इज रिकर्सिव. सो सी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. वन मोर क्वेश्चन. Yes, student, what is the correct answer for this question? Here A को रिड्यूस किया गया है. A is reduced to B in M many to one मैपिंग फंक्शन है. Denote that language A is mapping reducible to language B. Which one of the following is false? आपसे false पूछा गया है. My dear student, A B में reduce किया गया है. So B is recursive. If B is recursive, this portion is recursive. Recursive कैसा होता है? Decidable होता है. Then A is recursive, right? इधर वाला अगर recursive है, dear student, इस बात को समझ लीजिएगा. इस बात को, इसका कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन, इफ बी रिकर्सिव देन ए रिकर्सिव होगा. इफ बी इज आरईसी देन दिस इज आरईसी. सेकंड कंक्लूजन, सर सेकंड कंक्लूजन क्या होगा? सर नेगेशन ऑफ ए, दिस इंप्लाइज नेगेशन ऑफ बी, एंड दिस इज आरईएल, दिस इज आरईएल, एंड तो देन इट मस्ट बी आरईएल, राइट? सो आरईएल. सो नहीं, इफ इट इज आरईएल, इफ इट इज अनडिसाइडेबल की बात होती है डियर स्टूडेंट. ये रिकर्सिव और रिकर्सिव का बात नहीं हो रही है, अनडिसाइडेबिलिटी की बात हो रही है. सो A implies B is recursive, then A is recursive. Yes, this is correct. If B is recursive, then A is recursive. B is decidable, then A is decidable. False पूछा गया है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. Now A is undecidable. Dear student, A is undecidable. B is undecidable. No sir, मैंने ऐसा नहीं कहा था. If A is undecidable, if A is undecidable, no negation. Left hand side वाला अगर undecidable है, then this is undecidable, right? Left hand side वाला अगर undecidable है, then right hand side वाला it must be undecidable. Okay, so ये क्या फर्स्ट वाला तो ट्रू हो गया. सेकंड कह रहा है A is undecidable, then A reduced to B is must be undecidable. This is also true. आपसे false पूछा गया है dear student, आपसे false पूछा गया है. B is recursively enumerable, then A is recursively enumerable. If B is recursively enumerable, इधर वाला recursive enumerable है. If B is recursively enumerable, then A, yes, this is all, ये इस पे भी true हो रहा है. B is recursively enumerable, then this is also recursively enumerable. Okay, if B is recursively enumerable, then A is recursively enumerable. If B is not recursively enumerable, if B is not recursively enumerable, then A is not, no, it not necessary. जो नॉट नेगेशन वाला कंडीशन है वो ए के लिए है. ए के लिए आप देखिए, नेगेशन वाली कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड के लिए है. ओके, if B is not recursively enumerable, then A is not recursively, no, this is not a statement. The statement is होता अगर A is not recursively enumerable, then B is not recursively enumerable, right? So this is true, this is false statement. Okay. Okay, student.
If B is recursive, then A is recursive. If B is recursively enumerable, then A is recursively enumerable language, right? So right answer D is a correct answer. Now come to next question. Student, ये not equals to sign है. This is not equals to sign. This is not equals to sign. So let S equals to what S is a language and S belongs to 0, 1 का whole star, such that decimal value of S को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 2 एंड ds mod 7 not equals to 4. So which of the following statement is true? My dear student, this is regular. हमने finite automata में देखा था. This is regular. Finite automata डिजाइन कर सकते हैं. This is also regular. This is also regular. And regular and regular. And इसका mean what? Intersection. इसका mean Cartesian product. Cartesian product means what? Intersection. Intersection of two regular languages is what? This is end means what? End means, dear student, end means this is the intersection. So intersection of basically two regular language is what? It is a regular language. So which answer is correct? L is recursively enumerable. Yes, all regular languages are recursively enumerable, but not recursive. That's why this answer is wrong, right? L is recursive. Yes, सारी regular क्या है? Recursive है. सारी रेगुलर, आप इस बात को वेन डायग्राम को आप दिमाग में रखिए, सारी रेगुलर डीसीएफएल है, सारी डीसीएफएल सीएफएल है, सीएसएल है, ये आरईसी है और ये आरईएल है, राइट? जब ये रेगुलर आ रहा है तो रिकर्सिव भी है बट नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. एल इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री, यस सही है बट नॉट रेगुलर, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. एल इज रेगुलर, सो राइट आंसर इज डी इज अ करेक्ट आंसर. एल इज अ रेगुलर. ओके, now consider the following set. What is the correct answer for this question, student? I'm waiting for your reply. Everybody please reply answer for this question. Consider the following sets. Set of all recursively enumerable languages over the alphabet 0, 1. आपसे पूछा गया डियर स्टूडेंट अनकाउंटेबल. सर व्हाट इज काउंटेबल सेट? व्हाट इज काउंटेबल सेट? इज देयर वन टू वन करेस्पॉन्डेंस विद द वन टू वन करेस्पॉन्डेंस विद द नेचुरल नंबर. अगर आपका वन टू वन करेस्पॉन्डेंस है विद द नेचुरल नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल सेट. A set of all recursively enumerable languages over the alphabet 0, 1, over the alphabet 0, 1. Yes, all recursively enumerable languages are और recursive are कैसे हैं? सारी की सारी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज क्या है? आपकी काउंटेबल है. सर सिग्मा स्टार, सर इफ सिग्मा इक्वल्स टू 0,1 है, इफ सिग्मा इक्वल्स टू 0,1 है, देन सिग्मा स्टार इक्वल्स टू व्हाट? 0,1 स्टार. सर इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं, सर एप्सिलॉन 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 नाउ 0 0 0 0 0 1, इस तरह से आप लिखेंगे तो एवरी नंबर को आप सभी नंबर को आप वन टू वन नेचुरल नंबर से मैप कर सकते हैं. देखिए दिस इज 1 एंड हियर दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड 4 5 6 7 8 9, आप सभी से वन वन करस्पॉन्डेंस विद द नेचुरल नंबर. सो सिग्मा स्टार इज अ काउंटेबल सेट. सिग्मा स्टार इज अ काउंटेबल सेट. सिग्मा स्टार इज अ काउंटेबल सेट. डियर स्टूडेंट, this is a countable set, sigma star. Now this question is saying set of all recursive enumerable language over the alphabet this is this. So my dear student, set of all Turing machine binary encoding of Turing machine, set of all binary encoding of Turing machine, सारे के सारे all Turing machine कैसे हैं? all Turing machine, सारे के सारे ट्यूरिंग मशीन किस तरह काउंटेबल हैं? सर वाई इज काउंटेबल? क्योंकि सभी ट्यूरिंग मशीन को आप बाइनरी इनकोडिंग में लिख सकते हैं, कोई ना कोई बाइनरी नंबर होगा वो इसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा. तो सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन इज अ काउंटेबल एंड और सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन के करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज इज व्हाट? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज. सो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज दिस इज अ काउंटेबल, राइट? If recursively enumerable language is countable, then it means what? सर रेगुलर लैंग्वेज, अगर हम बात करें रेगुलर लैंग्वेज एंड CFL एंड CSL एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ये सारी की सारी कैसी हैं? काउंटेबल हैं. दिस इज काउंटेबल, दिस इज काउंटेबल, राइट? क्या हो रहा है भाई? सो सेट ऑफ ऑल दिस इज काउंटेबल, यस, बस पूछा गया है अनकाउंटेबल. दिस इज अ काउंटेबल, दिस इज अ काउंटेबल, राइट? दिस इज सी काउंटेबल.
सेट ऑफ ऑल सिंटैक्टिकली वैलिड सी प्रोग्राम, सारे के सारे सी प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग क्या सी प्रोग्राम जो होगा, एनी सी प्रोग्रामिंग, नॉट ओनली सी प्रोग्रामिंग, जावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ग्रामर उसका क्या होगा सर, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, any programming language, the grammar of any programming language is what context free grammar, CFG, right? Or the language of any programming language के corresponding, this is a CSL, right? Both comes under this. CFG से जो language generate होगा, this is a CFL, and this is a CSL. सारी के सारी CFL और CSL ये कैसी है आपकी, comes under recursive enumerable language, and all recursive enumerable language is countable. So this set is also countable. So this is also countable. This is also countable, right? Come to S3, set of all languages over the alphabet 01. My dear student, this is sigma star, and set of all languages हमने previous अभी discuss किया, set of all languages अभी discuss किया था. So 1 plus 2 plus 3 is 2 की power sigma star. Set of all languages, is this countable? No, it come इसके अंदर आपकी non REB है, जिसके लिए कोई ट्यूनिंग मशीन आपका डिजाइन नहीं होगा. So set of all languages over the alphabet sigma, it means what? Set of all possible subset of this. So 2 की power sigma star, it means what? 2 की power sigma star, it is set of all languages, set of all languages, set of all languages, and it this is what? Not RE, this is not RE. So this is not countable, dear student. And वैसे भी आप जानिए, this is the property of countable set. Power set of infinite set is not countable. Power set of infinite set, this set is what? Infinite set, infinite set, infinite set, and power set of infinite set is not countable. So this is not countable, this is not countable, this is uncountable set. And set of all non-regular language over the alphabet 0, 1. सर non-regular language क्या होगी? Non-regular language आपकी क्या है? Not RE, not RE, not RE. So non-regular language is also known as not RE. So generalize आप इस statement नहीं दे सकते हैं. Set of all non-regular language over the alphabet 0, 1, right? This is also uncountable. This is also uncountable because ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी, right? Set of all languages. So S3 and S4, S3 and S4. So B is the correct answer for this question. Lakshmi, are you GFG student? Lakshmi, Lakshmi Narayan, are you GFG student? Okay. So, okay, Lakshmi, आप GFG की प्लेलिस्ट उनके कोर्सेज पे, ओके. जो स्टूडेंट जीएफजी स्टूडेंट नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डियर स्टूडेंट इस नंबर पे, एंड यू कैन कनेक्ट मी एट लिंक्डइन. माय लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च शैलेंद्र सिंह एट जीएफजी गीक्स फॉर गीक्स, आप वहां मुझे से कनेक्ट कर सकते हैं. आई विल प्रोवाइड यू सोर्स फॉर वीडियो लेक्चर्स, राइट? नाउ and you can connect me at WhatsApp. This is my WhatsApp number, 844 761 94 844 761 9466. 844 761 9466. This is my WhatsApp number. Okay, आप इस पे मुझे पिंग कर सकते हैं, एंड सर्च माय नेम शैलेंद्र सिंह एट गीक्स फॉर गीक्स, राइट? आप लिंक्डइन से कनेक्ट हो जाइए. आई विल प्रोवाइड यू सोर्स. ओके, सो right answer is S3 and S4 is the correct answer. Okay. Now come to next question. ये क्वेश्चन अभी ऑलरेडी लक्ष्मी फोन नंबर बेटा बताया है ना, फोन नंबर मैंने अभी बताया है. This is my WhatsApp number. Ping me at this number, or you can connect me at LinkedIn profile and search my name is Shailendra Singh at Geeks for Geeks Mentor, and you can connect me. If you want to more related to gate and materials, then you can ask me there, right? So now come to this question. If sigma be a finite non-empty alphabet and 2 to the power sigma star be a power set of sigma star, which one of the following is true? So dear student, अभी मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट प्लस 2 प्लस 3, अगर आपको ध्यान हो, it will be what? 2 to the power sigma star. And you know the power set of infinite set, power set of infinite set is uncountable. Is uncountable. This is the property.
आप अनकाउंटेबल, जब आप इसकी थ्योरी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबिलिटी चैप्टर में पता चलेगा. पावर सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट इज अनकाउंटेबल. So this is an infinite set. What infinite set? This is sigma star is an infinite set, and this is a power set. This is a power set. This is a power set. It means what? It indicates set of all languages. Set of all languages. Set of all languages. All languages means what? Sir, RE plus not RE. RE plus not RE. RE plus not RE. And it will be what? It is uncountable. Okay. So 2 के बाद sigma star is uncountable, but sigma star is countable. Sir, how sigma star is countable? Because this is, you can represent sigma star. You can enumerate sigma star one to one corresponding with the natural number. Okay. So to a sigma star is uncountable and sigma star is countable. So C is the right answer for this question. Okay. Now, डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इस तरह पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको गेट एग्जाम में मिलेंगे. दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ राइस थ्योरम, राइट? सो फॉर अ ट्यूरिंग मशीन M, for a Turing machine M, denote an encoding of M. This is the binary encoding of Turing machine, right? Consider the following two languages. L1 ये given है. M takes more than 21 steps on all inputs. Okay. And second is M takes more than 21 step on some input. This is for all and this is for some inputs. Okay. So which of the following is correct? Dear student, steps की बात आए, it returns finiteness. It return what? It returns finiteness. ये क्या रिटर्न बता रहे हैं? Finiteness. Okay. Sir, 2021 step है. M is a encoding of Turing machine. M takes more than 2021 step in all input. So आप इस केस में after 2021 steps, Turing machine decide whether it is halt or not. So it is decidable, right? After 2021 steps, Turing machine decide whether it is halt or not. So it is decidable. 2021 steps, 2021 steps आप देख लीजिए कि 2021 steps के बाद ये हॉल्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट? तो हमें पता चल जाएगा दिस इज डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल. ओके. जिसके लिए हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगी, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, एंड हियर इसके लिए भी हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट कर जाएगी, राइट? सो बोथ आर डिसाइडेबल. L1 एंड L2 आर डिसाइडेबल. L1 एंड L2 आर डिसाइडेबल. ओके. जब भी स्टेप्स की बात आए डियर स्टूडेंट, स्टेप्स की बात आए तो आप इसे काउंट कर सकते हो. 2021 स्टेप्स के बाद आपको पता चल जाएगा वेदर डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल, राइट? आफ्टर 2021 स्टेप ट्यूरिंग मशीन डिसाइड वेदर इट इज हॉल्ट और नॉट, सो इट इज डिसाइडेबल. Okay, so both return finiteness. So that's why finiteness, if both return finiteness, it will be decidable. It will be decidable, right? Okay, so A is a correct answer for this question. Now come to next question. Which of the following languages are undecidable? Note that M indicate encoding of Turing machine. Which one of the following is undecidable? Which of the following is undecidable? So this is solved by Rice theorem. Dear student, there are two theorem, Rice theorem and advanced Rice theorem. But advanced Rice theorem नहीं, आप इसी से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे. So Rice theorem क्या कहता है डियर स्टूडेंट? देखिएगा, any non-trivial property of recursively enumerable language is undecidable. Dear student, this is saying, Rice theorem is saying any non-trivial property of recursively enumerable language is what? Undecidable. Undecidable. Sir, a property is a trivial. Property trivial कब होगी? A property is trivial if either it is not satisfied by any recursively language. A property is trivial if either it is not satisfied, by any recursive enumerable language, or if it is satisfied by all the recursive enumerable language, right? Then this is called trivial property. Otherwise, it is a non-trivial property. समझे student? Sir, what Rice theorem is saying? What Rice theorem is saying? Any non-trivial property, आपको ये बताना है कि any non-trivial property of recursively enumerable language is what? It is undecidable. Now, sir, what is trivial and non-trivial property? So यहाँ पे मैंने explain किया है what is trivial property. पहले ये समझिएगा. A property is a trivial if either it is not satisfied by any recursive enumerable language, या तो एक भी recursive enumerable language से satisfied ना हो, या सभी से satisfied हो, right? A property is a trivial if either it is not satisfied by any recursive enumerable language, or
if it is satisfied by all recursively enumerable languages, then this type of property is called trivial property. Now, sir, what about non-trivial property? Otherwise, otherwise it is non-trivial. Otherwise means what? This property is satisfied by some recursively or some say not satisfied. So this is non-trivial property. This type of property is called what? It is undecidable. So now come to first. Which of the following is undecidable, dear student? So कौन सा undecidable है इसको बताइएगा. LM, sir, what is M? M indicate the encoding of Turing machine. M indicate the encoding of Turing machine. Any Turing machine, you can encode any Turing machine binary encoding, just like a binary encoding of Turing machine M. So L1 equals to M and LM equals to phi. LM equals to phi. Sir, if M is a Turing machine, sir, if M is a Turing machine, then what is LM? Sir, what LM? This is a recursive enumerable language. Language corresponding to Turing machine is recursively enumerable language. So this A first is saying what? ये कह रहा है कि all recursive enumerable languages are empty. All recursive enumerable languages are empty. This is a trivial or non-trivial property. Is all recursive enumerable languages are empty. क्या सारी के सारी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज एम्प्टी है? नो सर, सम आर एम्प्टी, सम आर नॉट एम्प्टी. तो दिस इज नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी. सो दैट्स व्हाई दिस इज अनडिसाइडेबल. प्रॉब्लम, राइट? नाउ L2, M1 input W reach state queue exactly 100 steps, right? So again this is a steps का केस आ रहा है, या you can say steps वाला केस है. तो it return finiteness, so this is decidable. It return finiteness, so it is a decidable. It return 100 steps की बात है, 100 steps, right? After 100 steps, Turing machine decide whether it is halt or not, so it is decidable. Got it, student? Now LM is recursive. This is saying what? M is a Turing machine and LM is what? Recursively enumerable language. क्या सारी की सारी recursively enumerable language not recursive है? Sir, this is trivial or non-trivial property? Sir, this is a non-trivial property. Why so? No, sir, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी recursive enumerable language are not recursive language. Some are recursive, some are not recursive. This is non-trivial property. That's why this is undecidable. Okay. Now LM contain at least 21 member. At least 21 member. This is the membership problem. And membership problem of recursive enumerable language is what? Undecidable. अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए membership problem of, आप देख सकते हैं, this is a membership problem of recursively enumerable language is what? This is undecidable, dear student. Okay, so this is a membership problem, so this is undecidable and this is decidable. Now the question asks what? Which of the following language is are undecidable? आपसे पूछा गया है. So sir, ये नहीं कर रहा है, L2 नहीं कर रहा है. This is decidable because this is decidable. L1, L3 and L4. L1, L3 and L4 only. So answer is what? Undecidable. L1, L3 and L4 are undecidable, right? So right answer is A. Got it, student? Now देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए. M take at least, सर एटलीस्ट हो, एटमोस्ट हो, जब भी स्टेप्स की बात आए, रिमेंबर इट, जब भी स्टेप्स की बात आ रही है, तो आप स्टेप्स के केस में ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या रिटर्न कर रहे हैं? फाइनाइटनेस. सो दिस इज डिसाइडेबल. व्हाई सो सर? बिकॉज आफ्टर 2016 स्टेप Turing machine decide whether it is halt or not, so it is decidable. Got it, student? सर डिसाइडेबल हम बोलते किसको है? डिसाइडेबल जिसके लिए हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करे. डियर स्टूडेंट, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन कोई लैंग्वेज एल है. ओके, सर लैंग्वेज एल के लिए हमने एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन किया एंड हमने एक डब्ल्यू स्ट्रिंग अप्लाई किया. सो इट डब्ल्यू, इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल, इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल, डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल, तो एक्सेप्ट के केस में एक्सेप्ट एंड हॉल्ट, रुक जाएगी मशीन एक्सेप्ट एंड हॉल्ट करके, राइट? सर इफ डब्ल्यू इज नॉट बिलोंग्स टू एल, और वी कैन से, और डब्ल्यू इज बिलोंग्स टू एल कॉम्प्लीमेंट,
सो दिस इज अगेन मशीन हॉल्ट करेगी, रुक जाएगी एंड इस इनपुट को रिजेक्ट कर देगी, राइट। यानी 100% हॉल्ट मशीन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दिस ट्यूरिंग मशीन, दिस इज अ हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, halting Turing machine, this is a halting Turing machine, and this language is not what is a recursive language. If it is recursive, then सारी recursive कैसी हैं, decidable, because finite time के अंदर आप इनका आंसर बता सकते हैं, right? This is decidable. So here L1 and L2 both are decidable because finiteness आप बता रहे हैं. After 2016 step Turing machine decide कि आप देख सकते हैं 2016 स्टेप्स के बाद कि ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट है या नॉट हॉल्ट है, आपको दोनों चीजें पता चल जाएंगी, दोनों चीजें फाइनाइटनेस के अंदर पता चल गई, सो इट रिटर्न फाइनाइटनेस, दैट्स व्हाई दिस इज अ डिसाइडेबल. नाउ एम एक्सेप्ट epsilon. Come to L3, dear student L3. M is what? Turing machine. M is a binary encoding Turing machine. So M except epsilon means what? This is a trivial or non-trivial property. क्या सारी की सारी ट्यूरिंग मशीन, all Turing machine in the universe except epsilon, या all Turing machine in the universe reject epsilon, right? No sir, ऐसा नहीं है. Some Turing machine accept epsilon, some Turing machine reject epsilon. So this is a non-trivial property, and all according to Rice theorem, every non-trivial property is what? Undecidable. Every non-trivial property of the recursively enumerable language is undecidable. Got it, student? So first L1 इस टाइप्स की बात आ रही है, डिसाइडेबल है, ओके. एंड यहाँ राइस थ्योरम लग रहा है, m एक्सेप्ट एप्सिलॉन, इट मींस व्हाट? m इज अ सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट एप्सिलॉन, या ऑल ट्यूरिंग मशीन रिजेक्ट एप्सिलॉन. दिस इज अ ट्रिवियल प्रॉपर्टी. नो सर, ऐसा नहीं है. सम ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट एप्सिलॉन, सम ट्यूरिंग मशीन not accept epsilon. So this is the non-trivial property, and every non-trivial property is undecidable according to Rice theorem. So this is undecidable. Now answer is what? Where which of the following is true? L1, L2 are recursive, and L3 is not recursive. If it is undecidable, then this is not recursive, right? So answer is what? I think C answer. ये L2 के कारण ये आंसर गलत हो गया. L2 is recursive, not recursive. L1, L2 are recursive, and L3 is not recursive. So C is the correct answer. Okay. Now, what is the correct answer for this question, student? Yes, everybody please reply answer for this question. What is the correct answer for this question? What is the correct answer for this question, students? I'm waiting for your reply. I think there are only 2 questions left. A single tape Turing machine app has 2 states, Q0, Q1, Q0, Q1. Q0 is a starting state. The Q0 कैसा है? Starting state है. 2 alphabet M, 0, 1 and blank. B is a blank. Here B is a blank symbol used to indicate end of the input string. The transition of M. Okay. So which of the following is true? So Turing machine, interpretation of Turing machine, इसका समझिएगा डियर स्टूडेंट. दिस इज सेइंग व्हाट? क्यू नॉट स्टेट पर अगर आपने जीरो इनपुट रीड किया तो जीरो को राइट करके इसने वन कर दिया, स्टेट चेंज हो गई, क्यू वन होगी, राइट डायरेक्शन में मूव हो गया, राइट. नाउ क्यू नॉट पे वन इनपुट रीड हुआ, वन को वन रखा एंड नेक्स्ट स्टेट चेंज हुआ क्यू वन एंड राइट डायरेक्शन में मूव हुआ, राइट. एंड क्यू नॉट पे ब्लैंक रीड हुआ, दिस इज हॉल्ट. क्यू नॉट पे ब्लैंक रीड हुआ, दिस इज हॉल्ट. ओके. एंड सिमिलरली Q1 स्टेट पे जीरो रीड हुआ, जीरो को राइट करके Q1 वन किया, स्टेट इज Q1 एंड राइट डायरेक्शन मूव हुआ. Q1 पे वन रीड हुआ, स्टेट को Q0 कर दिया, नेक्स्ट स्टेट Q0, वन को वन रखा, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो गया. सो माय डियर स्टूडेंट, एम हॉल्ट ऑन ऑल स्ट्रिंग इन जीरो एंड वन. इनको पहले देख लेते हैं. सर सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जीरो लेके देख लेते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज व्हाट? जीरो. नाउ Q0 स्टेट पर जीरो इनपुट रीड हुआ, Q0 पर जीरो इनपुट रीड हुआ, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट ये ऐसे बनाइए, जीरो है, इसके राइट हैंड साइड पे क्या होगा? ब्लैंक, एंड हियर ब्लैंक, एंड दिस इज ब्लैंक. ब्लैंक टेप पर ब्लैंक इंडिकेट नथिंग, कुछ भी नहीं है. एंड नाउ क्यू नॉट स्टेट पर जीरो रीड हुआ. सर क्यू नॉट पे जीरो, जीरो को राइट करके क्या किया? जीरो को राइट करके वन कर दिया.
जीरो को राइट करके वन, एंड राइट डायरेक्शन में मूव हो गया, राइट डायरेक्शन में मूव हो गया, एंड राइट डायरेक्शन में स्टेट चेंज होकर Q1 आ गई। सो राइट डायरेक्शन मूव हुआ, स्टेट चेंज होकर Q1 आ गई। नाउ Q1 पे क्या रीड होगा डियर स्टूडेंट? ब्लैंक। सर Q1 पे ब्लैंक रीड हुआ। नाउ दिस इज अ Q1 स्टेट, Q1 पे ब्लैंक रीड हुआ, इसने ब्लैंक को ब्लैंक रखा, ब्लैंक को ब्लैंक रखा, लेफ्ट डायरेक्शन मूव हुआ, स्टेट Q0 कर दी। सर ब्लैंक को ब्लैंक रखा, ब्लैंक को ब्लैंक रखा, और लेफ्ट डायरेक्शन मूव हुआ, स्टेट Q0 कर दिया, राइट। लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होगा, स्टेट Q0। सो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हुआ, स्टेट Q0। अब Q0 पे क्या रीड होगा डियर स्टूडेंट? Q0 पे 1 रीड हुआ, Q0 पे 1 रीड हुआ, Q0 पे 1 रीड हुआ, 1 को 1 रखा, राइट मूव किया, स्टेट इज Q1, राइट, स्टेट इज Q1। एंड Q1 पे फिर से ब्लैंक रीड हुआ, Q1 पे ब्लैंक रीड होगा, दिस इज अ लूप, Q1 पे ब्लैंक रीड हुआ, सो Q0 एंड ब्लैंक लेफ्ट, दिस इज अ इनफाइनाइट लूप, दिस इज अ इनफाइनाइट लूप, ये हॉल्ट नहीं करेगी मशीन, दिस इज अ इनफाइनाइट लूप, राइट। ये मशीन हॉल्ट नहीं करेगी, स्ट्रिंग की लेंथ भले ही सिंगल है, लेकिन दिस मशीन कैन नॉट हॉल्ट, ओके। तो एम halt on all string ending with no, this is wrong, right? Now come to one, check for one का केस भी देख लीजिए। Here this is blank blank, smallest string is 1 1, and now Q0 state पर 1 रीड हुआ, स्टार्टिंग इज Q0 स्टेट पे 1 रीड हुआ, 1 1 को 1 ही रखा, राइट डायरेक्शन मूव हुआ डियर स्टूडेंट, एंड स्टेट चेंज करके Q1 कर दिया। नाउ Q1 पे ब्लैंक रीड हुआ, ये यही वाला सिचुएशन बन गया, Q1 पे ब्लैंक रीड हुआ, Q1 स्टेट पर ब्लैंक रीड हुआ, स्टेट इज Q0, लेफ्ट डायरेक्शन मूव हुआ, एंड ब्लैंक को ब्लैंक रखा। नाउ फिर Q0 पे आप इससे इस पे जा रहे हैं, इससे इस पे जा रहे हैं, राइट। दिस इज अ इनफाइनाइट लूप, दिस इज अ इनफाइनाइट लूप, it is not halt, it is not halt. So my dear student, so which one is the right answer, dear student? Which one is the right answer, sir? This produce what, sir? Smallest string 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, right? जब ये 0 1 पे हॉल्ट नहीं हो रहा है, तो 0 प्लस 1 का पॉजिटिव क्लोजर किसी पे हॉल्ट नहीं करेगा, लास्ट सिंबल क्या होगा, इधर 0 या 1। लेकिन दिस इज हॉल्ट, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एप्सिलॉन नो इनपुट, तो Q0 स्टेट पे ही कोई इनपुट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका ब्लैंक आएगा, तो मशीन हॉल्ट कर जाएगी। सो ये कह रहा है एम डज नॉट हॉल्ट, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, because M halt, if there is no input, then it read blank and it halt. So ये कह रहा है does not halt, that's why this is false. But M does not halt, this is true, M does not halt on any string 0 plus 1. Yes, आप देख सकते हैं इस पे halt नहीं हो रहा है, तो इस पे कैसे halt हो जाएगा? So A is the correct answer. Student, लास्ट क्वेश्चन और है, इसका आंसर आप सभी लोग दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। M be the encoding of Turing machine as string over 0, 1, and L, this M is a Turing machine that accepts a string of length 2014. So what is the correct answer for this? Everybody please reply. This is the last question, so I'm expecting everybody please reply answer of this question. So dear student, if length is 2014, सर लेंथ क्या है 2014। सो बेसिकली अगर लेंथ अभी हमने देखा था पीछे प्रीवियस केस में देखा था माय डियर स्टूडेंट, लेंथ अगर सिंगल भी थी, सिंगल लेंथ पे भी ये मशीन हॉल्ट नहीं कर रही है, राइट। और एक से ज्यादा लेंथ पे भी हॉल्ट कर जाएगी, ओके। देखिए क्या मशीन हॉल्ट कर रही है? नो। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन कैसा है? अनडिसाइडेबल है। दिस इज द थ्योरम एंड इसका प्रूफ भी है। दिस इज द हॉल्टिंग प्रॉब्लम बेसिकली। सो दिस कम्स अंडर व्हाट? दिस कम्स अंडर comes a halting problem of Turing machine. Halting problem of Turing machine. And halting problem of Turing machine is undecidable. You cannot say there is no algorithm कि आप बता दें कि ये क्या होगा, right? So this is undecidable. Okay. आप देख सकते हैं दिस इज नॉट स्टेप्स। इन द प्रीवियस केसेस में स्टेप्स की बात हो रही थी, एंड स्टेप्स रिटर्न्स व्हाट? फाइनाइटनेस। स्टेप्स रिटर्न व्हाट? फाइनाइटनेस। बट दिस इज अ लेंथ। सो हो सकता है इस लेंथ पे लूप में फंसी हो, और 2014 स्टेप्स वो कर रहा है, बट इनफाइनाइट लूप में फंसा हो सकता है हॉल्ट हो जाए। सो दिस इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, एंड दिस इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, राइट। सो दिस इज अनडिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल, बट क्या इसके लिए
क्या इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनेगी? यस, डेफिनेटली बन जाएगी। इट इज a recursive enumerable language. आप इसके लिए ट्यूरिंग मशीन, दिस इज a recursive enumerable language, but it is undecidable. Undecidable but not recursively enumerable. Decidable but not recursive. Undecidable but recursively enumerable. So right answer क्या है dear student? This is undecidable but a recursive enumerable language. So B is the correct answer for this question. लक्ष्मी, डिसाइडेबल कैसे हो जाएगा ये? दिस इज द हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन। आप डिसाइडेबल नहीं कह सकते। आप देखिए लेंथ, अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ, आप प्रीवियस इसको देखिएगा, स्ट्रिंग का लेंथ 1 था, क्या ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट कर रही है? आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। क्या हॉल्ट कर रही है? नो। क्या हॉल्ट कर रही है? सर नो, इनफाइनाइट लूप में। और ऐसा नहीं कि हॉल्ट करेगी नहीं, हो सकता है हॉल्ट भी कर जाए, हम ऐसी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करें, 1 स्ट्रिंग की लेंथ कर भी सकती है। तो दिस इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। दिस इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। This is not related to steps. Whenever steps की बात आए तो ये क्या रिटर्न करता है? finiteness, right? And finiteness, this is always decidable. This is always decidable, right? But length की बात आए, length at least, length at most, length की अगर बात आती है तो it is undecidable, dear student. It is undecidable. It not return finiteness because infinite loop में tuning machine infinite loop में फंस सकती है. So this is undecidable problem, and this problem comes under halting problem of tuning machine. This is undecidable. But इस undecidable problem ये क्या है? Recursive enumerable. इसके लिए tuning machine design हो जाएगा. So this is undecidable but recursively enumerable language. Okay, so B is the correct answer, dear student. Okay, so B is the right answer. So okay, so this is the last for today's session. Students, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एवरीबडी प्लीज लाइक द सेशन एंड प्लीज शेयर द सेशन टू योर फ्रेंड्स, राइट? एंड इफ यू वांट टू मोर देन यू कैन कनेक्ट मी एट लिंक्डइन एंड व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। ओके, एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।